हम शांति। ये 6 फरवरी 2022 की मुरली के ऊपर कुछ विचार है। आज हम रिपीट कर रहे हैं 6 जनवरी 1990 की मुरली। इस सप्ताह बाबा हम सबको सिखा रहा है कि शिव बाबा जो है, जैसा है, हमें उनको पहचानना है सर्व स्वरूप में। तो बाबा सिखा रहा है कि शिव बाबा तो निराकारी सो निरंकारी है। शिव बाबा बिल्कुल निष्काम सेवाधारी है। उनमें कोई अभिमान नहीं है, न अपनी पूजा कराता है, न कुछ खाता पीता है, न स्वर्ग स्वयं के लिए बनाता है। शिव बाबा सब कुछ हम बच्चों के लिए करता है, सब कुछ देता है। तो हमें भी शिव बाबा जैसा बनना है, निस्वार्थ, निरंकारी। और कल हम बाबा से सुन रहे थे कि हमें निर्विकारी भी बनना है। कर्मेंद्रियां धोखा देती हैं, आंखें धोखा देती हैं, मन भी धोखा देती हैं, तो हम सबको निर्विकारी भी बनना है। तो बाबा समझा रहा है कि बच्चे कभी कभी डिसरिगार्ड शिव बाबा का रखते हैं, क्योंकि पूरी पहचान नहीं है। पहचानते जाएंगे तो फिर रिगार्ड भी बढ़ता जाएगा। हम सब बाबा का ज्ञान और बाबा का प्रेम का खास अनुभव रहता है, परंतु वही बाबा साथ साथ बहुत तेज भी है, कड़ा भी है। वही कालों का काल है। शिव बाबा धर्मराज भी है। तो ये भी हमें भूलना नहीं है। साथ साथ शिव बाबा ज्ञान सूर्य है। तो जब हम ज्ञान सूर्य बोलते हैं ना, तो इसका मतलब निकलता है कि शिव बाबा पतित पावन, शिव बाबा पवित्रता में बहुत तेज है, बहुत कड़ा है इसमें। तो शिव बाबा को जानना माना पवित्रता को समझना और धारण करना। वैसे देखा जावे, देवता धर्म कोई रिलीजन जैसा धर्म नहीं है। देवता धर्म का मतलब है पवित्रता की धारणा। तो बाबा हम सबको आज कह रहा है कि बच्चे, तुम अपने को अपनी अनादि और आदि स्वरूप में देखो। अनादि स्वरूप में परम धाम में आप कर्मातीत शुद्ध थे। फिर जब आप सतयुग में अवतरित होते हो, तो देवता तो इस जगत में फरिश्ता है। देवता तो उनका गायन भी है, संपूर्ण निर्विकारी, 16 कला संपन्न, सर्वगुण संपन्न, अहिंसा परमो धर्म। उनका तो पवित्र प्रवृत्ति गृहस्थ आश्रम है। तो आप जब ओरिजिनली आते हो, आपकी आदि अवस्था संपूर्ण पवित्रता की है। आपका शरीर पावन, आपका मन शुद्ध निर्विकारी, आपकी दिल निस्वार्थ, और आपका संबंध में संतुष्टता, हल्कापन, रहम भावना।
तो बाबा आज हम सबको चैलेंज दे रहा है कि बच्चे उस आदि संपूर्ण पवित्रता के आईना में देखो। आप सिर्फ अपने को परसेंटेज की पवित्रता में संतुष्ट नहीं रखो, संपूर्ण पवित्रता की आईना में देखो। हम बाबा के बनते हैं तो जरूर फर्क तो होगा स्वयं में, तो हम उस फर्क को देख करके कभी खुश हो जाते हैं और अलबेले भी हो जाते हैं। हम देखते हैं कि लाइफस्टाइल में तन तो बहुत जास्ती शुद्ध लाइफस्टाइल है, फिर मन में भी हम जास्ती शांत हैं, व्यर्थ संकल्प कम हो गया, दिल भी जो पास्ट के दुख थे, कामनाएं थी, वो भी कम होती गई है, और फिर संबंध में भी जास्ती ऐसे मिलनसार हम रहते हैं। तो परसेंटेज की पवित्रता भी अच्छी है, इम्प्रूवमेंट्स तो अच्छा है, परंतु बाबा एवर रेडी उसको कहा कहता है संपूर्ण पवित्रता का। तो बाबा कहा कह रहा है कि उस संपूर्ण पवित्रता की आईना में अपने को चेक करो। अपना शरीर प्रभु की अमानत समझ करके, ट्रस्टी हो करके संभालो, चलाओ। मन को तो मन मना भाव रखना है अथवा मन सा सेवा में रखना है। दिल को सच्ची निस्वार्थ बनानी है। जितने योग से अपने को संपन्न करेंगे तो फिर सेवा द्वारा भी कुछ स्वार्थ नहीं रखना पड़ेगा। सेवा में कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, चाहे स्थूल चाहे सूक्ष्म। यदि हम सेवा द्वारा अपना सेल्फ एस्टीम को जैसे लेते हैं, अपना नाम मान शान, बाबा ने गुरुवार के भोग संदेश में भी कहा था ना कि बच्चे अपने अभिमान से अपने को बंधन में डाल देते हैं। तो ये स्वार्थ जो है, ये भी चेकिंग। यदि मुझे लगता है मैं किसके लिए सेवा कर रहा हूँ, मैं कुछ दे रहा हूँ, तो उसमें भाव में कुछ मिक्सचर है। तो ये चेकिंग चाहिए कि बिल्कुल साफ दिल। तो फिर एक ड्रामा का नियम है, साफ दिल तो मुराद हासिल, अर्थात जो कुछ आपका कामना है, इच्छा है, वो पूरी हो जाएंगी। ड्रामा पूरी कर देंगे, बाबा पूरी कर देंगे, परंतु दिल साफ चाहिए। स्वार्थ है तो ये एक ब्लॉक है। और फिर संबंध में संतुष्टता। तो बाबा आज सिखा रहा है कि घृणा आपको संतुष्ट रहने नहीं देंगे, क्योंकि ये तो कलयुग है, और कलयुग में तो बहुत कुछ है, बहुत बातें हैं जिससे घृणा आनी ही चाहिए। परंतु बाबा समझा रहा है कि घृणा से आप भारे हो जाते हो और व्यर्थ संकल्प बहुत चलते हैं, तो आपकी खुशी रहती ही नहीं है, हल्कापन रहता ही नहीं है। और यदि आप अपने घृणा वर्णन करेंगे तो आप दूसरों को भारे कर देंगे, और यदि आप भारे हो और वो भारे हैं तो कोई बदलेगा ही नहीं, ठीक है ना। भारे होने से बदलती नहीं है परिस्थिति अथवा व्यक्ति। यदि हल्के हैं तो शायद कुछ फर्क पड़ेगा, ठीक है ना। तो बाबा समझा रहा है
कि ऐसी संतुष्टता भी शब्द में स्वच्छता है। तो आज बाबा देह भान का यही परिभाषा सुना रहा है कि देह भान माना अस्वच्छता, और अस्वच्छता माना शरीर को अपना समझ करके चलाना, मन को विकार के तरफ, कोई न कोई लगाव के तरफ जाता रहे। दिल में कुछ स्वार्थ है, सच्चाई की कमी है भाव में, भावना में, तो ये भी अस्वच्छता है। और संबंध में असंतुष्टता है, भारेपन है, तो ये भी अस्वच्छता है। तो 95-96 मुरलियों में एक बारी बाबा दादियों से मिल रहा था, और बाबा दादियों ने भी कहा कि आपसे जास्ती मम्मा ने जमा किया था। बाबा ने कहा कि आपने तो जास्ती सेवा की, जास्ती समय के लिए, मम्मा ने कम समय सेवा की, और उन दिनों में तो ब्राह्मण तो कम थे, तो लोग भी कम थे। परंतु मम्मा की विशेषता थी कि बहुत गंभीर थी, और हर कर्म में 100% जमा किया। तो ये मम्मा को, सरस्वती को होली हंस के सवारी देते हैं। तो बाबा समझा रहा है कि ये होली हंस माना संपूर्ण स्वच्छता। तो मम्मा की ये अवस्था थी जिससे हर कर्म में 100% वो जमा करती रही। तो कम समय में कर्मातीत बनी, केवल 29 वर्ष में मम्मा कर्मातीत बनी। तो बाबा सिखा रहा है कि बच्चे यदि इतनी स्वच्छता धारण कर लेंगे तो फिर जल्दी जमा सब कुछ हो जाएगा, और हम जल्दी कर्मातीत बन सकेंगे। Om Shanti. Om Shanti. These are some thoughts on the Murli of the 6th of February 2022, and today we're repeating the Murli of the 6th of January 1990. This week in the Murlis we've been developing our recognition of Shiv Baba. All of us should have the aim that during this confluence age at birth, we want to get to know Shiv Baba as he is, what he is, in all of his forms. Since Monday, Baba's been explaining to us that key features of Shiv Baba's personality are that he is incorporeal and he is egoless. And that egolessness manifests in desirelessness. Shiv Baba does not want anything for himself. He comes in a very simple form, and he doesn't even make us worship him. And he also doesn't create heaven for himself. So we get to learn what it means to be selfless, egoless. Shiv Baba is not bothered about external personality, external show. Shiv Baba has his internal substance, and that's fine for him. And then yesterday, Baba was focusing us on becoming viceless, so incorporeal, egoless, and viceless. And we were hearing from Brahma Baba 2 or 3 days ago that children sometimes lack regard for Baba because they haven't recognized him fully. And Baba has this fierce side to him as well. He is the death of deaths. He is Dharamraj. And another one linked with that is he is Gyan Surya, the son of knowledge. So Gyan, G-Y-A-N, and Surya, S-O-O-R-Y.
Y-A. Gyan Surya, the sun of knowledge. Gyan is knowledge, Surya is sun. And as Gyan Surya, he is fiercely pure. He is fierce about purity. He is the purifier. And this is what we've got to understand if we want to understand Baba. Baba is about knowledge. Baba is about love. Baba is about peace. But at his core, he is fiercely pure. It's not just a relative purity, but the sun of knowledge is fiercely pure. So today, Baba is asking us to look into the mirror of complete purity. Baba is saying that children, think back when you were in the soul world and you first incarnate into the golden age. You are living angels, embodied angels, deities. And a deity's body is pure, it's a temple. A deity's mind is viceless. A deity's heart is sincere and selfless. And a deity's relationships are of contentment, lightness, and there's no sense of dislike for anyone. There's just a feeling of compassion, of accommodation. So as deities, this is your original complete purity. So now look into that mirror of complete purity. Don't just be satisfied with relative purity. I am living a more pure lifestyle than I was before. That's good. My mind is more peaceful than it was before. I have fewer waste thoughts. That's good as well. My heart is becoming less selfish. That's good. And my relationships are becoming more harmonious. That's good. So all of the improvements are good. But don't just be content with that. Baba is challenging us to look into the mirror, not of relative purity, but of complete purity. So Baba is saying, can you move from being percentage pure to completely pure? Because you have to return home in the same state that you were when you came down. And this is what Baba calls ever ready. So we're going to need to consider our body to be a temple, Baba's property, and we're a trustee. So how would we look after Baba's things? And then the mind has to be Manmanabhav with Baba and with serving the souls of the world through yoga. And then our heart has to be sincere and selfless. We've got to examine our motives. The more that we fulfill ourselves through yoga, the less we're going to need to take through service. Instead of serving as something I'm doing, service should just be something that is being done. It's just normal. It's not that I'm giving anyone anything, doing anything for anyone. I have to go beyond that
just like a fish naturally swims, a Brahmin just naturally serves. It's not that there's any greatness to that. This is just normal for me. I should be doing this. So in this way, Baba is explaining to us that children, you have to become completely selfless, completely sincere. And then that sort of sincere heart, it is able to activate a law within the drama that if your heart is true, then your desires are fulfilled. So Shiv Baba looks for that sincerity. The drama responds to that sincerity, and then your desires will take practical shape in the drama. But if there's selfishness mixed in those desires, then it's like a block for the drama, in the drama. And then we've got to look at contentment, because where we have any level of disliking what anyone is doing, we dislike their personality or parts of their personality, we dislike their actions. And in the Iron Age, there are so many things to dislike. But Baba is saying the problem with that is that your happiness goes, your contentment goes, and you become heavy because of your thinking. And you also, if you say anything, you'll make the other person heavy as well. So Baba is saying that you're going to need to just learn to be content and see how contentment, that absence of dislike, the power to accommodate and adjust, that actually brings about lightness in yourself and others. And it's actually that lightness which is more likely to bring change. If you're heavy, the other person's heavy, actually there's less likelihood of things changing. But if you're light, the other person is light, then maybe things will change. So, a big mirror. And in Bhakti, Saraswati, the goddess of knowledge, is shown riding a swan. So Baba's evoking that image of the holy swan. And I think it was in the 1995 or 1996 Murlis where there's a section where Baba is talking to the daddies. And interestingly, he's saying to the daddies that none of them accumulated as quickly as Mama did. So he's saying that Mama had this maturity about her where even though she did less service than the daddies for just a shorter period of time, and there were fewer BKs in those days, but Baba was saying she accumulated 100% in everything that she did. So it wasn't the quantity of service that was important there, but it was that every act of service, if it's done with this level of cleanliness, then you accumulate 100%. So Goddess Saraswati shown riding a holy swan. And really, if we look at Mama, how she became Karmatit in just 29 years, because she was able to create this level of cleanliness inside of herself. And so then she was able to accumulate fully in every action. And this is what Baba is guiding us towards. Om Shanti.